Hello, everyone, and very good afternoon. I hope you all are well and very happy new year to everyone. I hope you had a great day, great first day of 2025. And by great day, I mean you did whatever you were supposed to do. I mean, this is exam time for you, so it's high time that you pay more focus on what is to be studied, tests to be given, revision things to be done. So I hope you all must have enjoyed also and did your work also. So today in the class we are going to discuss current electricity questions. Okay. So basically we are revising things through questions. आज की क्लास में लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द चैप्टर और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. सो इन आवर सिलेबस ऑफिशियली गिवन बाय दैट एनटीए इज सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट है. इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, 2024 में भी आया है. बेसिक डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट इट कंस्टिट्यूट्स करंट. सो करंट इज दिस. नाउ देर इज अनदर थिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सबसे पहले चीजें जो याद रखनी है तुम्हें, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक एवरेज वेलोसिटी होता है. ठीक है. फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नाउ कमिंग बैक टू इट्स मैग्नीट्यूड, drift velocity is equal to how much? E tau by m. So drift velocity is like this, where E is charge on electron, capital E is electric field, tau is relaxation time, and m is your what? M is the mass of charge carrier. ठीक है. देन इज द टर्म मोबिलिटी. आई मीन यहाँ पे एक और चीज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम. ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्ज कैरियर है वो विदाउट कोलाइडिंग कितने टाइम तक चला, यानी कि रिलैक्स्ड स्टेट में कितने टाइम तक चला. दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम. और ये टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. आई मीन इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टाउ विल डिक्रीज. ठीक है. डन है. मोबिलिटी इज व्हाट? मोबिलिटी इज अनदर टर्म जिसको हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज टर्म्ड एज मोबिलिटी, म्यू. और अगर आप इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ई टाउ बाई एम. Right, so it is independent of electric field. It's basically, here you can see, constant for a particular material. And their relation with electric current. So electric current को एक तो हमने मैक्रोस्कोपिक टर्म में लिखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. और इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या लिखते हैं? ए एन ई वी डी, where A is the area of cross section of the wire, N is number of charge carrier per unit volume, E is charge on one electron, and the VD is what? Drift velocity. Done. Next, coming to Ohm's law. So Ohm's law को हमने दो बार लिखा था. If you have attended my class, so एक तो मैक्रोस्कोपिक टर्म में हम लिखते हैं V equal to IR, where V is the potential difference, I is the current, R is the resistance, right? एंड नेक्स्ट इन टर्म्स माइक्रोस्कोपिक टर्म में भी हम लिखते हैं J इज इक्वल टू हाउ मच? सिग्मा ई. सो हियर J इज योर व्हाट? J इज योर करंट डेंसिटी. सो अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे J क्या है? J इज बेसिकली हियर, आई मीन एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस ओनली इन द क्लासरूम. एनीवे, गिव मी सम टाइम. ओके, सो जे तुम्हारा क्या है? करंट डेंसिटी है, विच इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. ठीक है. एंड जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन की आई मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है. डन है. सो बेसिकली करंट डेंसिटी जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी. इट हैज डायरेक्शन, बट ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? इसको हम स्केलर क्वांटिटी बुलाते हैं. बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इसका इसका डायरेक्शन किधर होता है? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है. ठीक है. सो दैट इज योर जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज योर कंडक्टिविटी. सो सिग्मा को हम अगेन माइक्रोस्कोपिक टर्म में डिफाइन करते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है इस फॉर्मूला से, सो याद रखना. डन है. दिस आर द थिंग्स. नाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सो इफ यू टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, resistance is equal to what? Rho L by A. Again, rho is what? Resistivity. And resistivity and conductivity are related. How? Rho is equal to 1 by sigma. So if we know sigma is Ne square tau by m, rho is what? M by Ne square tau.
L is what? Length of the conductor across which current is flowing. A is the area of cross section into which current is entering. ठीक है? So this is how we calculate what? We calculate resistance. Done? Now let's look at, उसके बाद हमें क्या देखना है? VI characteristic of ohmic and non-ohmic conductor. So if the conductor is ohmic, that is if conductor is following Ohm's law, तब हमारा ग्राफ कैसा होता है? V versus I का ग्राफ. This is a straight line, right? This is how this will look like straight line. And if it is not following Ohm's law, as happened in case of semiconductor devices, वहां पे तुम्हारा कर्व क्या होगा? नॉन लीनियर होगा. सिंपल सी चीज है. Now what is this electrical energy? So when current flows through the wire, some energy is dissipated, और उस एनर्जी को हम क्या बुलाते हैं? उस एनर्जी को हम बुलाते हैं I²R T. ठीक है? So this is energy getting consumed if current is flowing for t time. This I²R is called as power. इसी को हम क्या बुलाते हैं? पावर. सो पावर को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक तो I²R लिख सकते हैं, और I को अगर आप V/R लिखोगे, then this can be termed as V² by R. This is power, right? Electrical resistivity and conductivity I have already explained and given you the formula. नाउ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. सो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि आई मीन इसको मैं तुरंत समराइज नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की चीज है. हमने क्वेश्चन भी किया था सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. एंड टू एंड कनेक्शन होगा, करंट फ्लोइंग विल बी सेम. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी सेम? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. वी विल डू सम क्वेश्चंस जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री को मैं डिस्कस करूंगी. सो देयर इन द क्वेश्चन वी विल क्लैरिफाई दैट थिंग अगेन. ठीक है? नाउ वन मोर थिंग, अभी और भी चीजें पढ़ना है हमें. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. ये कैसे डिपेंड करता है? अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू आर नॉट है एट सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट, then at any temperature T, resistance will be written as R naught 1 plus alpha delta T, where delta T is what? Temperature difference. Initially T naught है, final T है, तो delta T is T minus T naught if temperature is increasing. Done? Now internal resistance, potential difference and EMF of a cell. So cell को हम ऐसे represent करते हैं, और सेल के थ्रू, सेल किसी भी मटेरियल से बना है तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना. सो दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस. And there are two things we define here. One is called EMF of the cell. So that is basically equal to, I mean, if this is the positive electrode, it has potential V plus. If it is negative electrode and it has potential V minus, then E is simple how much? V plus minus V minus. This is your E. This is called EMF. लेकिन एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हेन वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, and in that case potential difference is written as E minus I into small r. Done it? So this is difference. Now combination of cells in series and parallel. We have I have told you, if you are connecting things in series, if you are connecting things in series, how we add cells. So we just check one thing: if their current directions are same, if their tendency to I mean give current is same, it is in the same sense, then EMF will get added of individual cells. I mean, if first cell has EMF E1, second E2, third E3. You just see here, first one will deliver current in the left direction, second also left, third also left. So E equivalent here will become E1 plus E2 plus E3. And since they are in series, R equivalent, if all the cells have internal resistance R1, R2, R3, will become R1 plus R2 plus R3. But if currents are not flowing in this, if their tendency to send out current is not in the same sense, in that case E equivalent को blindly आप प्लस मत करते जाना. फर्स्ट चेक की कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड है. डन है? सो इफ इट इज लाइक दिस एंड सो ऑन, सपोज कर लो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सेल n है and n number of cells are oppositely directed. In that case, total EMF will be how much? It will be n. Suppose कर लो सारे का EMF मैंने सेम लिया है, ठीक है, E लिया है. So n E minus minus 2m E. ठीक है? जहाँ पे इंडिविजुअल सेल का मैंने EMF क्या लिया? E. जैसे देखो मैंने 2 यहाँ पे क्यों लिखा? अगर तुमने यहाँ पे सेल लिया, सपोज कर लो यहाँ पे ऐसे,
ठीक है। अब इस केस में फर्स्ट सेल जो है वो इधर करंट सेंड करेगा, सेकंड इधर, और थर्ड कर रहा है इधर। सो नेट ईएमएफ यहाँ पे क्या होगा, E1 माइनस, आई मीन टू टू आर सेंडिंग करंट इन द सेम सेल्स। सो लेट्स से यहाँ पे ये भी E है, ये भी E है, ये भी E। सो 2E माइनस E होगा। अगर फॉर्मूला में पुट करो तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर हाउ मेनी, 3। सो यहाँ पे रखोगे 3E माइनस हाउ मेनी सेल्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, 1। So 2 into 1 into E. So ultimately you are getting E, and that is why 2 is coming, right? So this is the formula. But अगेन माइनस भी हो रहा है, लेकिन आर इक्विवेलेंट अभी भी क्या होगा, सबका ऐड होगा, क्योंकि ऑल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ठीक है। पैरेलल में हम कैसे कंबाइन करते हैं, सो पैरेलल का सिंपल फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना है। सो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट विल बी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 एंड सो ऑन। ठीक है। और 1 बाई ई इक्विवेलेंट को आप क्या बोलोगे, सॉरी 1 बाय आर इक्विवेलेंट को आप क्या बोलोगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट अप टू 1 बाय Rn। डन है। सो दिस इज द क्विक थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। अब देखो और भी चीजें पढ़नी है, किरचॉफ्स लॉ और देयर एप्लीकेशन। सो किरचॉफ्स लॉ में हमने 2 लॉ पढ़े थे। एक था तुम्हारा वोल्टेज का लॉ, पहला क्या था, वोल्टेज लॉ था। ये क्या कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस whatever things we are getting in a closed loop is always equal to what, 0। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और तुम दूसरा क्या था हमारा, करंट लॉ था। करंट लॉ क्या कहता है कि कोई भी जंक्शन पे, अगर अगर तुम्हारे सर्किट में जंक्शन है, तो कोई भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से क्या होगा, जाएगा। सो दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट, दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके कहने का सिंपल मतलब ये होता है कि चार्ज कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, चार्ज कहीं भी क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। डन है। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज में तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, और बीच से एक ऐसे जा रहा है इस आर्म से, सपोज बैटरी कनेक्टेड है। देन वी से दैट R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और अगर ये R4 है, देन वी टॉक लाइक R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अगर ऐसा है, अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो बीच से कोई करंट नहीं जाएगा, जिसको हम गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। इन दैट केस वी से कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज व्हाट, बैलेंस्ड। नाउ व्हाट इज दिस मीटर ब्रिज। सो मीटर ब्रिज बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस है। और वो डिवाइस क्या होता है, हमारे पास 2 स्लॉट्स होते हैं रेजिस्टर्स को ऐड करने का। एक स्लॉट जहां पे नॉन रजिस्टर ऐड होता है, तो दिस इज वन स्लॉट। और एक स्लॉट ऐसा होता है जहां पे हम क्या, नॉन रेजिस्टेंस मीन्स स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। और दूसरे स्लॉट में हम अननोन रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, और यहाँ नॉन स्टैंडर्ड को ऐड किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वायर होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा एक वायर है, जिसको आइडियली हम 100 मीटर लेते हैं, अगर कुछ, सॉरी 1 मीटर लेते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो। सो आइडियली दिस इज 100 सेंटीमीटर। Then if nothing is given, then there is a galvanometer over here, and then this is jockey. We slide it until we get the no deflection in the galvanometer. So same as Wheatstone bridge, it is working. And how it helps us calculate the uh, uh, unknown resistance. So here simple is कि अगर मुझे null point L1 लेंथ पे मिला है, लेंथ का मेजरमेंट हमेशा यहाँ से करते हैं, यहाँ से, इस एंड से, लेफ्ट एंड से। सो अगर ये L1 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, RS बाई L1 इज इक्वल टू R अननोन बाई 100 माइनस L1। सो इफ रिक्वायर्ड थिंग्स आर गिवन वी कैन कैलकुलेट। ठीक है। उसके बाद 2 डिवाइस हमें पढ़ना है, अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और हम गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, दिस इज कॉल्ड अमीटर, है ना। और ये सर्किट में सीरीज में कंबाइन होता है। अगर मुझे किसी भी सर्किट में करंट मेजर करना है, अमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं, इसका काम है वोल्टेज मेजर करना, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, शॉर्ट, वेरी स्मॉल रजिस्टर, जिसको संट कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम किस चीज में कनेक्ट करते हैं, जिसके क्रॉस भी हमें वोल्टेज मेजर करना है उससे पैरेलल। So this is all the thing. Now let's start with the question. So this is your very first question on the screen. Take your time. I'm giving 1 minute and do it. ठीक है।
चलो। So I hope you all must have done it. Let me explain it or let's do it now together. So मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाया था, वर्टिकल सिमेट्री और हॉरिजेंटल सिमेट्री। सो सबसे पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। सो ए और बी से पास करता हुआ एक लाइन बना लो। सो ए और बी से पास करता हुआ ये लाइन है, एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। दिस कैन बी द लाइन ऑफ हॉरिजेंटल सिमेट्री। अगर इसको मिरर की तरह ट्रीट करते हैं और जैसा अप है वैसा ही अगर डाउन हो, तब हम कहेंगे ये लाइन हॉरिजेंटल सिमेट्री का लाइन। डन। वर्टिकल सिमेट्री का लाइन कैसा होता है? हॉरिजेंटल सिमेट्री का जो लाइन बनाते हैं हम, उससे जस्ट परपेंडिकुलर ले लो। सो यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। और देखो, अगर मैं इसको मिरर की तरह ट्रीट करूं, तो जैसा राइट हैंड साइड है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड है। इधर भी आर 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 एंड देन आर, एंड इधर भी आर 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 एंड दिस आर। सो राइट एंड लेफ्ट एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा है। सो दिस इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का रूल था कि उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे सर्किट के, वो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स है? ये पॉइंट है, ये है, ये है। सबका पोटेंशियल सेम है। कहने का मतलब इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, इसके थ्रू भी करंट नहीं जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, सो करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज जीरो। यानी कि इस सर्किट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ये रहा तुम्हारा आर, और ये क्या रहा तुम्हारा आर, एंड दिस इज आर। डन है। दिस इज योर आर, एंड दिस इज अनदर आर। इसको हमने हटा दिया क्योंकि उसके थ्रू करंट नहीं जा रहा, तो उसको सर्किट से हटा दो, वो इनसिग्निफिकेंट है ना। एंड दिस इज योर आर, एंड देन दिस इज आर। सो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज करके हमारा सर्किट इतना सिंपल हो गया। अब देखो, आर है, आर है, दिस इज आर, दिस इज आर, एंड दिस इज अगेन आर, दिस इज अगेन आर, एंड दिस इज आर, राइट? नाउ सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। सो दिस इज आर आर टू आर, दिस इज टू आर, दिस इज टू आर। ऑल दिस टू आर इन व्हाट? पैरेलल, है ना। सो इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट ऑफ दैट होल सर्किट इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस व्हाट? 1/2r. So this is R equivalent is equal to how much? 2r/3. And then this circuit will get reduced to something like this. This is R, this is 2r/3 अभी अभी हमें मिला है, and then this is your R, and this was the point A and this was the point B. Now what is the R equivalent across A and B? Simply they are in series, add it. So if you're going to add it, this will become 2r plus 2r/3. So this is equal to 8r/3. And this question came in your JEE Mains 2024. So whatever question I have taken today in the discussion, सारे के सारे क्वेश्चन 2024 जेई मेंस के, ठीक है। आई एम नॉट रिटन इट बिकॉज सारे एक ही ईयर के क्वेश्चन। डन है। चलो। सो हॉरिजेंटल सिमेट्री और वर्टिकल सिमेट्री प्लीज उसको रिवाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट को सिंपल बनाने में। डन है। दैट वाज योर करेक्ट आंसर। नाउ टेक दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम। आई एम गिविंग यू 1 or 1.5 minutes. Do it and let me know. Harish, how are you? हरीश, कौन सी चीज वंस मोर एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन को?
ओके, ठीक है। सो देखो, क्वेश्चन में मैंने ये एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे। चलो, लेट मी रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो ये क्वेश्चन सिंपल है कि ए और बी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अब देखो, ये सर्किट को हम सिंपल कैसे बनाएंगे, तो मैंने ना क्लास में दो चीज बताई थी। एक था हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा था वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले तो लाइन ड्रॉ करना है, तो पहले हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं और वो कैसे होता है। तो देखो, ए और बी के क्रॉस तुम्हें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो ए और बी को ज्वाइन करता हुआ एक क्या बना लो तुम, एक लाइन बना लो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, ए और बी से पास करता हुआ एक लाइन मैंने बना लिया। डन है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये जो लाइन है वो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ये होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर तुम इस लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करते हो, तो देखो कि इसका अप पार्ट और डाउन पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं। तो सेम सेम होना चाहिए। तो मिरर इमेज है ना, ये भी आर आर आर, ऐसे तीन, और इधर भी आर आर आर। सो मिरर इमेज है। सो दिस इज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से सॉल्व होता है। अब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है पहले हॉरिजेंटल लाइन बनाओ। हॉरिजेंटल लाइन हमने बना लिया। अब इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन मैंने बनाया यहाँ पे। अब मुझे देखना है कि ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगेन इसको मिरर की तरह ट्रीट करो और देखो कि राइट और लेफ्ट पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं। है ना, इधर भी आर आर तीन है, इधर भी आर आर तीन है। सो दिस इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का रूल है कि उस पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे सर्किट का ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा। तो सर्किट से ये बीच वाला पोर्शन हटा दो, ठीक है। अगर तुमने हटा दिया तो बीच वाले पोर्शन का डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा, है ना, ये कुछ ऐसा। अगर आप इसको अब देखो, यहाँ पे आर था और यहाँ पे एक और आर था। अब आप इसको ध्यान से देखो, अब तो ये इजी हो गया ना। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर। ये आर और आर सीरीज में है, आर आर टू आर। ये भी आर और आर सीरीज में है, टू आर। ये भी सीरीज में है, टू आर। और ये तीनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। सो इस पूरे का मैंने बोला आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इस पूरे का आर इक्विवेलेंट होगा 1/2R प्लस 1/2R plus 1/2R. So that will give you how much? That will give you 3/2R. वो क्या देगा तुम्हें, 3/2R। ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R/3। ठीक है। आर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या होगा, टू, एक सेकेंड रुक जाओ। तो दिस इज योर हाउ मच। सो आर इक्विवेलेंट इज हाउ मच, दिस इज 2R/3। अब आप देखो, ये आर है, ये पूरा 2R/3 है, और ये भी आर है। इन तीनों को, ये तीनों अब किस में है, सीरीज में, ऐड कर दो। आंसर विल बी हाउ मच, 8R/3। इज इट क्लियर हरीश? ओके, थैंक यू। चलो आगे करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्रॉम योर अमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। टेक योर टाइम, think over it. After that we will do it together, ठीक है।
If you're getting the answer, then you can let me know in the chat section. ठीक है? और अगर कहीं स्टक हो तो भी तुम मुझे बता सकते हो कि मैम अब करते हैं ऐसा कुछ, नाउ लेट्स डू इट टुगेदर, ऐसा कर सकते हैं ना? बिकॉज देन वी विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस. सो एक काम करते हैं, साथ करते हैं. देखो, गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम. सो ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर. अगर तुम्हें याद हो सही से, तो गैल्वेनोमीटर कैसा होता है? गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर होता है ना, और यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स होते हैं ऐसे, है ना. फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कि जीरो डिफ्लेक्शन से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक वो जा सके, और उसके लिए ये सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट लेगा, है ना. अगर करंट सफिशियंट है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, अगर करंट सफिशियंट नहीं है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं होगा. डन है. यहाँ पे कह रहा है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर. कहने का मतलब कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट this galvanometer can take, that is indicated by letter Ig, is equal to how much? 20 micro ampere. So this is the value. डन है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एज एन अमीटर ऑफ रेंज 0 टू, ओके हरीश, आई नीड टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ठीक है. सो what I'm telling you is galvanometer is made of what? Different pointers, right? There is one single scale, and then there are different marks. I mean, 1 degree mark, 2 degree mark, up to 180 degree mark it may be. Full scale deflection का मतलब this needle is deflecting from 0 to 120, 180 degree. Done है? And for that it will take certain amount of current. Done है? And that current is indicated by letter Ig. So here Ig is 20 micro ampere. Now the question is value of resistance to be added to use it as an ammeter. Now how we make ammeter? I mean, how we convert galvanometer to ammeter? We connect a small resistance in parallel to the galvanometer. So if we have to convert it into ammeter, what I will do? I will connect a small resistance in parallel with the galvanometer. So let's say galvanometer has a resistance of Rg, and I have connected here small resistance Rs. Now this is ammeter. Done. And we have to make ammeter of range 0 to 20 milliampere. Yani ki this ammeter will measure maximum amount of current equal to 20 milliampere. And then we have to tell what will be the value of Rs. So this hole is ammeter. What you can see here in the diagram, this hole is what? Ammeter. When you will connect it, because we connect ammeter in series with in series in the circuit in which we have to measure the current. ठीक है. सो इसको सीरीज में आप कनेक्ट कर दो कोई भी एक रेजिस्टर से जिसके अक्रॉस आप क्या निकालना चाहते हो? करंट. तो व्हाट विल हैपन? मैक्सिमम रेंज ऑफ दिस अमीटर इज गिवन एज 20 माइक्रो एम्पियर. लेट्स से हियर करंट इज 20, sorry, milliampere. So here current will come as 20 milliampere. Now how much current can go through galvanometer? Ig, it can take maximum 20 microampere current. So from 20 milliampere, how much current will come this side along the arm of galvanometer? कितना current जाएगा galvanometer के arm में? 20 microampere, and rest current is how much? 20 milliampere minus 20 microampere. That will go through what? Rs. क्योंकि देखो यहाँ पे सर्किट, इसके पास दो ऑप्शन है, एक है Rg, एक है Rs. यहाँ पे है Rg and here it is Rs. Current coming here is 20 milliampere. So here it will go 20 microampere. So current going in Rs will be how much? 20 milliampere minus 20 microampere. ठीक है. So microampere means 10 to the power minus 6 ampere, right? And milliampere means how much? 10 to the power minus 3. So this 20 milliampere minus 20 microampere can be said equal to 20 milliampere, क्योंकि whatever you are subtracting is very small in comparison with from what you are subtracting. I mean 20 microampere is very small than that of 20 milliampere. Then ये तुम्हें approximation दिमाग में रखना है. First and second thing is what? While solving ammeter question, only thing we apply is
voltage across RS will be same as voltage across RG because they are in parallel. So now equate it. Equate the voltage. So voltage across RS will be how much? Current flowing through RS, that is 20 milliampere minus 20 microampere into RS. This is voltage across RS. What is voltage across galvanometer? So that is equal to 20 microampere into RG, and RG value is given as 200. These two will be equal because they are in parallel. Now, here approximation I will use. I will say this is equal to approximately 20 milliampere. So I will write here this. And this is equal to 20 into 10 to the power minus 6 into 200. ठीक है? अब आप इसको solve कर लो. So if you are going to solve it, 20 will get cancelled. And here RS will be equal to how much? 0.20 ampere, right? So that will be your answer. Okay? Any doubt? Actually, ये pain. Okay, Harish, you have any doubt? Here RS will be equal to how much? 0.20 ampere. Okay, chalo, done. Let's move ahead now. So this is the question. This also came in 2024. All questions are from there. Take 1 minute, try solving it, then we will do it together. I'm here only. If you facing any doubt while solving the question, text. चेनवी भावनगर कहाँ थे इतने समय से? कैसे हो तुम लोग? So I will just give you one hint. What things you should use in this question? जैसे whichever points are connected by conducting wire will have the same potential. जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे this point and this point. These two are connected by single wire. So these 2 points will have the same potential. So in terms of potential, let me say this is point 1. Then this is also point 1 because both are sharing the same potential. Similarly, this point and this point are connected by wire, right? So this and this point will also have the same potential. Let's say this is point 2 in terms of potential. Then this will be also point 2 in terms of potential. And then we have two different points also A and B. So this is A in terms of potential and this is B point in terms of potential. Done. Always while solving the circuit, while teaching also I have told you, if you have to solve the circuit, easily क्या करना है, पोटेंशियल के टर्म में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क कर लो. ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई हैव डन ओवर हियर. अब देखो, अब एक काम करो, सिंपल हमें कितना पॉइंट्स मिला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल? 4 पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट ए, पॉइंट बी. सो एक काम करो, पॉइंट ए, पॉइंट बी आई हैव रिटन एंड पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. रैंडमली आई हैव टेकन 4 डॉट इन द स्पेस. ठीक है? 4 डॉट मैंने स्पेस में बना ली. Now what I'm going to do, now I'm going to look at the circuit and connect resistors between different points. So between point B and 1, between point B and 1, there is a resistance of 8 ohm. So between point B and 1, I'm going to connect 8 ohm. Similarly, between point B and 2, so B is this and 2 is this, there is no resistance. है ना? B और 2 के बीच में कोई resistance नहीं है, so don't connect.
Now let's say between point 1 and 2. So between point 1 and 2, this is two resistance connected. So 11 and 4, they are in series. So this will become 15. So between 1 and 2, what I'm going to attach here first, 15 ohm. Done है. Again between 2 and ohm, these two resistance are there. Done. 8 plus 7, that is also 15. So यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, फिर से एक 15 ohm attach किया. And again between 1 and 2, this is also between 1 and 2, 10 plus 5, again 15. So यहाँ पे फिर से एक resistance connect करो जिसका resistors का value क्या है, 15 ohm है. So we have connected three resistors between 1 point and 2 equivalent to 15 ohm. And these three are in parallel, you can clearly see. अब देखो check कर लेते हैं between point A and 1. So between point A and 1 there is no resistance. A and 2 are directly connected and 6 ohm is there. So A और 2 के बीच में क्या कर लो, 6 ohm. We have to connect, we have to calculate R equivalent between A and B. अब A and B के बीच में क्या जोड़ दो, बैटरी. This is the question. Now this is very simple, right? Now you can clearly see 6 ohm, this is 6 ohm. This is in series with 15, 15, 15, and this whole is in series with 8 ohm. So one section is this, another section is this, another section is this. And 1, 2, 3 sections are in series with each other. So 15, 15, 15 in parallel will become how much? 1 by 15 plus 1 by 15 plus 1 by 15, 3 by 15. That is your 5 ohm. So this is what? This whole is your 5 ohm. This is 6. This is 8. These three are in series. So 6 plus 8 is 14. 14 plus 5 is 19. So correct answer will be C. So that is how you can look at the circuit. जो भी points तुम्हारा simple wire से connected है, understand that they are having same potential. So यहाँ पे हमने ऐसे ही किया. Done है? Now do this question. Take your time, do it, let me know. All questions are from previous year exam. ठीक है? 2024 JEE Mains. Sorry. Harish, I'm good. I'm fine. Thank you. Any answer? Anyone? See, what is the question? So basically, suppose Karlo, you have electric kettle. Done it? I'm very poor with diagram, but I will try to draw it. Okay. अच्छा बनाया मैंने. Suppose this is electric kettle. There is a wire in here. ठीक है? And this wire is connected to the main supply. This is the socket. ठीक है? So it has certain potential. And because of that, it is supplying certain value of current. And because of which, water inside the kettle is getting boiled. Done it? And how much heat it will receive in T time? So power that is getting delivered by the main source into time. This is the heat it is receiving. So what is given in the question? Water boils in an electric kettle in 20 minutes. So time is 20 minutes for boiling it.
डन है। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, v इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि पावर को हम क्या लिखते हैं, v स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, है ना, आई स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, बट सिंस यहाँ पे वी आर कीपिंग मेन सप्लाई कांस्टेंट, दैट इज वी आर कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट, सो यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर रादर देन यूजिंग आई स्क्वायर आर, बिकॉज आई को वी आर नॉट कीपिंग कांस्टेंट, वी आर कीपिंग मेन सप्लाई कांस्टेंट, दैट इज what voltage we are keeping as constant. So v square by r into t. Initially t is how much? 20 minutes, and in 20 minutes it is able to give us h amount of heat. What is said next is how should we change the length? Done hai? For water to get boiled in 15 minutes. So still we will receive the same amount of heat. But now we have to receive heat in how much time? 15 minutes. V has to remain constant. What is going to change? Resistance, है ना, यानी कि वायर का लेंथ. Done. So let's say here this is r dash. If you're going to divide these two, h will get cancelled, v square got cancelled, and if you see here, this is 20 by 15 into r dash is equal to 1. So if you see here, 20 into r dash is what? Rho L dash by area of cross section is equal to 15 into rho into L by A. Because in the question it is given, we are doing nothing with the area of cross section. Nothing is mentioned. We are not stretching the same wire. We are doing nothing. We are simply replacing initial wire with another same wire of different length, right? So A is constant, rho is constant. Cut it again. And what is L dash? L dash is 15 by 20. So definitely it is less 15 by 20 L. So this is 3 by 4 L. So length is decreasing, and this is 3 by 4th of the original. Done. So this is your L dash. And so correct answer will be your 3. Okay. Chalo, I hope you have understood. Do this question now. This time I'm going to launch the poll. I feel like you people hesitate in sending me answers in the chat section. So sorting it out, I have launched the poll. ठीक है, तुम लोग यूज करो पोल का भी. Take your time first. Question is too easy. I will be giving you exactly 1 minute. Yes. Okay. Let's do it together now. So in the given circuit, terminal potential difference of the cell, how we calculate? देखो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया, दो टर्म्स होते हैं which we calculate. I mean, one is EMF, which is plainly difference of positive electrode potential minus negative electrode potential of the battery. And another is your terminal potential difference, which is equal to EMF of battery minus current flowing in that circuit into or through the cell into internal resistance of the cell. So this thing we have to calculate. So first we need to calculate how much current will flow from here through the cell, right? So how we can calculate current? We need to solve the circuit. So यहाँ पे clear दिख रहा है यार, ये दोनों they are in parallel. 4 are in parallel. So its equivalent will become how much? 4 is 2. 4 in parallel will give you 2. So this is 2. In that case, circuit will become what? This 4 is 2 ohm, and then this is 1 ohm. This is 1 ohm, and this is 3 volt. So 2 ohm and 1 ohm are in series. So R equivalent is 3 ohm. Current in the circuit will be net voltage 3 volt by 3. That is 1 ampere. Okay? So current is 1 ampere. Now calculate this thing. So if you are going to calculate it, E ka value is 3 minus I ka value is how much? 1. R is how much? Is 1.
So this will become how much? 2 volt. So correct answer will be what? 1. ठीक है? Do this question now. Question is very easy. Please do it fast. This is from the simple current का formula, delta Q by delta T. No, it's not a force. Electromotive force जैसा दिखता है. It's not a force. It's a power. I mean, it is. अगर तुम if you go to definition, then it's about how much work you will do in displacing a charge from positive terminal to negative terminal. ठीक है? So that is EMF basically. It's not a force. In the name there is electromotive force, but it's not that. डन है? क्योंकि देखो, जस्ट मेक इट सिंपल. ईएमएफ का यूनिट क्या लिखते हो? यूनिट ऑफ ईएमएफ इज इन वोल्ट, राइट? सो नो हरीश, let me explain it to you. जैसे बैटरी, if you write battery, it looks something like this. ठीक है? This is positive electrode. It has, let's say it has potential of V plus. It is negative electrode. Let's say it has potential of V minus. So EMF is V plus minus V minus. So this is your what? EMF. Done. And definition wise, it is how much work. क्योंकि देखो, याद होगा तुम लोगों को इन इलेक्ट्रोस्टैट आई हैव टॉट पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. डन. सो समझ रहे हो? पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. Here potential is getting indicated by letter E. I cannot go into deep, but this is the raw thing that you can talk about EMF. It's not force. ठीक है? Oh, sorry. Harish, is it clear? I discussed this thing in the starting of the class. Please, everybody, I'm just requesting everyone with folded hands, please join the, if you're joining, join in the start, at the very start. It's my request. देखो, now how you will solve the question? Number of electrons flowing per second in the filament of 110 watt bulb. You have to calculate number of electrons flowing per second. So if we know current flowing through the bulb, if we know I, then I can be written as delta Q by delta T. Delta T is what? Amount of charge. Delta Q is what? Amount of charge getting flown in the time delta T. This is current I, right? Here time is fixed in 1 second. So in 1 second, if delta T is equal to 1 second, then we have to calculate what will be the value of delta Q. So let's first calculate, we have to calculate number of charge, not charge ka value. But if we know charge ka value, then we can calculate number of charges. Because if 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge value is there, then we know 1 electron is there, right? So if we know how much coulomb of charge is flowing, then by unitary method we can calculate how many electrons are flowing per second. ठीक है? तो सबसे पहले तो करंट निकालो. करंट हम कैसे निकाल सकते हैं? Power is given. Power is written as what? V into I. So power here is 110. V is how much? 220 into I. I is how much? I is your 1 by 2. So current is half ampere. और अगर इस हाफ एम्पियर को आप यहाँ पुट करो, एंड डेल्टा क्यू वैल्यू वी डोंट नो, टाइम इज 1 सेकेंड गिवन हियर, सो डेल्टा क्यू इज हाउ मच? हाफ कूलम. And in half coulomb, how many electrons will be there? So in this much coulomb, 1 electron is there. In 1 coulomb, there will be 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. So in half coulomb, how many? Into half karoge. So basically, जितना भी charge आया है, delta Q, divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. That will give you the number of charge getting flown. So if you will calculate it, you will get 31.25 into 10 to the power 70. This is the answer. Okay, so this is your answer. Now do this question. This is from your Wheatstone bridge. चलो जल्दी से करना, ठीक है? सिंपल है. Wheatstone bridge का क्वेश्चन है.
Let me know. Potential difference between B and D is 0. So this is a question from balanced Wheatstone bridge. And what is the condition of balanced Wheatstone bridge? You all know this, right? Please do practice lots of questions. Whatever time is left, focus on solving more questions. Just take previous year question 2024-23. For each chapter, solve all the questions that came in these 2 years. Okay? You will definitely get above 150 number if you do this. Seriously. And if you have done it properly, nobody can stop you from getting above 200. Yes? Anyone who got the answer? जैसे यहाँ पे देखो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज हमने क्या पढ़ा है अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो and if it is connected with a battery like this and this is called galvanometer arm and if through this arm let's say this is A this is B if potential of A and B is same that is no current is flowing through this arm then this Wheatstone bridge is called balanced and in that case if it is R1 if it is R2 if it is R3 if it is R4 then we say that R1 by R2 is equal to R3 by R4. This is the reasoning we get, right? So here also use the same thing. B and D has same potential. So this is balanced Wheatstone bridge. Galvanometer is not attached, but it said that B and D have same potential. Then है उसके बाद देखो this is R1 thing and R1 value will be how much 12 in series will give you 24 24 in parallel will give you 12 so this is 12 and this is 1 in parallel so this whole is 0.5 this is also 0.5 this is how much this 12 this is 6 and then there is x in series so this whole is 6 plus x so in this case r1 is 12 ohm r2 is how much 6 plus x r3 is how much 0.5 r4 is how much 0.5 their balance just write this thing right so 12 by 6 plus x will be equal to 0.5 by 0.5 so this is 12 is equal to 6 plus x देखो कितने simple question है ना x is equal to 6 ohm so correct answer is your 3 nothing else you need to do right just look at the just look at the question read it apply the thing so first step application से ही answers आ रहे हैं चलो this is from the meter bridge this is the last question we are going to uh, do it after that we will leave I hope you people are taking mock test please everyone do take mock test ठीक है go through the solution also discuss among yourselves but please do take test it's very important more than anything if you're throwing your entire energy into board thing it's useless I would say because through board marks you're not going to get into any college please be wise and take proper decision don't do anything randomly ठीक है just because तुम्हें certificate में you want 95% to be shown don't do this because that 95 or 98% is not going to help you I'm telling you it's not going to help you in any way so please be now decisive and wise because you're not in ninth or 10th class 10th क्लास का मार्क्स तो वहां पे ऑप्शन ही है मार्क्स लाना बिकॉज इफ यू आर नॉट आई मीन गेटिंग मार्क्स देन अदर थिंग्स आल्सो यू आर नॉट डूइंग क्योंकि 10th में और कुछ है नहीं करने को ओनली मार्क्स गेटिंग थिंग बट इन 12 आफ्टर 12 यू हैव टू लुक फॉर अ कॉलेज सो बी वाइज यार आई विल टेल यू प्लीज so you already know the meter bridge I have also given you
recap in the start of the class. You can check after the class is over on YouTube, Avanti Live 5. ठीक है. So यहाँ पे what happens in meter bridge is simple as Wheatstone bridge. ठीक है. सिर्फ structure different दिखता different है, same ही है. So it will have two slots where you can add registers. ठीक है. So one slot is this and another slot is this. In one slot known resistance is added, that is called standard resistance, and in other slot unknown register is added, जिसका हमें resistance निकालना है. And then this whole thing is connected via a wire. This is the wire. ठीक है. This wire is usually of length 100 centimeter if not given in the question में कुछ नहीं दिया है about the wire, then you will take it as 1 meter. If it is given, then जो भी given है write that. This is this, then there is a galvanometer, then there is this sun. So it is same as Wheatstone bridge. वहां भी एक आर्म होता है ये R1, R2, R3, R4. Here it is balanced. It means through this no current is flowing. Done है? And length we measure from here. वो एक important है. Length we will measure from here. So if in the question it is given that balance length in first case is 40 centimeters, so we are calling this as 40 centimeter. Then this will become 60 centimeter in first case. So in first case, RS standard resistance is given 2 ohm. This by 40 is equal to how much? R by 60. So from here we can easily say कि R is 3 ohm. Now what we are doing? Now we are on shunting the unknown resistance with 2 ohm. Now here we are shunting this. Shunt कहने का मतलब you are adding a resistance in parallel. So you are shunting unknown resistance with 2 ohm. This is 2 ohm. And this we have calculated as 3 ohm. So 3 ohm and 2 ohm you have taken like this. Again, if you are going to write the equation, in second case, this length will be different. So let's say in second case, this is L1. So this will become 100 minus L1. So for second case, again, write the equation. RS by L1 will be equal to this R or R equivalent वहां पे जो भी आया है divided by 100 minus L. You will get the answer from here. L1 you will get, right? That is the new balance length. So difference you have to tell. Initially balance length was 40. Finally it is L1. So answer will be how much? Answer will be if L1 is greater then L1 minus 40. Okay? So this is very simple. I hope you all have understood whatever I discussed, but this is not enough. I hope you will take up more questions and you will do more questions. Okay. Thank you so much. I'm having class as of now for class 11th also. So I need to set it down now. Okay. Everyone, all the best, but do attend classes. Okay. Tomorrow, not tomorrow, there will be class. On Saturday, there will be class. And that class will be on weekend wala link. Okay. So please join for the classes. Last time also I took class for gravitation. No, very few of you were there. So please be there. Okay? Bye everyone. Take care. Let's meet on Saturday. Tomorrow is mock test. Do attend that. Bye-bye. Take care.